मैं तो शतुविस करेक्शन पे शतुविस तो पूरा करेक्शन करा शुरू मॉर्निंग चैंटिंग पेज 2 यो सो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाखातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावक संघो तमयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्घम् इमे सकार्ये यथा अर्हम् आरोपिते हि अभिपूजयामः साधुनो भन्ते भगवा शुचिरपरिनिभूतोऽपि पश्चिमा जनता नुकम्पमानसा सकारे दुर्गतपणाका प्रभूते पटिगण्हातु अम्हाकं दीघरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादिमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमस्सामि आनंदमयं बुद्धस्य भगवतो उपभाग नमकारं करोमसि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स त्रिरत्न वंदना हंदमयम रतनतय प्रणाम गाथा यो चेव संवेग परिकीर्तन पाठन च भणामसि। आज पूरा ही गाना है हमारा भी करना शुरू हो रहा है शुरू ही कर पेज 3 बुद्ध वंदना हंदमयम बुद्धाभिथूतिं करोमसि यो सो तथागतो अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादि मनुस्सानं बुद्धो भगवाति यो इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं ससमन ब्राह्मणीं भजन् सदेवमनुस्सं संयम अभिन्या सच्चिकत्वा पवेदेसि यो धम्मं देसेसि आदिकल्याणं मच्चिकल्याणं पर्योसान कल्याणं
सात्थं सव्यञ्जनं केवलपरिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेसि तमहं भगवन्तम् अभिपूजयामि तमहं भगवन्तं शिरसा नमामि हान्दमयं धम्माभिधूतिं करोमसि योऽसो स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनैको पश्चात्तं वेदितप्पो विन्योहीति तमहं धम्मम् अभिपूजयामि तमहं धम्मं शिरसा नमामि हान्दमयं सङ्गाविधूतिं करोमसि योऽसो सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाति तमहं संघम् अभिपूजयामि तमहं संघं शिरसा नमामि हान्दमयं रतन्तय प्रणाम गाथा यो चैव सम्यग् परिकीर्तन पाठं च भणामसि बुद्धो सुशुद्धो करुणामहर्णवो योचन्त शुद्धवरज्ञानलोचनो वन्दामि बुद्धम् अहम् आदरेण तं धम्मोपदीपो वियतस्य सत्तुनो यो मग्गपाकामतभेदभिन्नको लोकोत्तरो यो च तदत्तदीपनो वन्दामि धम्मम् अहम् आदरेण तं सङ्घो सुखेताभ्यतिखेतसंयतो यो दिट्ठसन्तो सुगतानुबोधको लोलप्पहीनो अरियो सुमेधसो वन्दामि सङ्घम् अहम् आदरेण तं पुण्यं मया यममम सबुपद्दवा माहोन्तु ते तस्य वसिद्धय इध तथागतो लोके उपन्नो अरहं सम्मा सम्बुद्धो धम्मो च देशितो नियानिको उपशमिको परिनिब्बानिको सम्बोधगामी सुगतः पवेदितो मयन्तं धम्मं श्रुत्वा एवं जानाम जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणमपि दुःखं शोक परिदेव दुःख दो मनस्य उपायासापि दुःखा अप्येहि संपयोगो दुःखो येहि विपयोगो दुःखो यमपि इच्छं न लभति तमपि दुःखं संकीर्तेन पंचुपादानखंदा दुःखा सेयतीनं रूप उपादान खंदो वेदनोपादान खंदो संयोपादान खंदो संघारोपादान खंदो विज्ञान उपादान खंदो ये संपरिन्याय धर्मानु सो भगवा
एवं बहुलं सावके विनीति एवं भागा च पनस् भगवतो सावकेषु अनुशासनी बहुला पवत्तति रूपम अनित्यम वेदना अनित्या संज्ञा अनित्या संखारा अनित्या रूपम अनित्या रूपम अनत्ता वेदना अनत्ता संज्ञा अनत्ता संखारा अनत्ता विज्ञानम अनत्ता सभी संखारा अनित्या सभी धम्मा अनत्ताति ते मयम् ऊतिणाम जातिया जरा मरणेन शोके परिदेवैहि दो मनस्यैहि उपायासैहि दुःखोतिणा दुःखपरिता अप्येव नाम इमस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य अन्तक्रिया संयायेताति चिरपरिनिभृतम् अपि तं भगवन्तं शरणं गता धम्मं च संघं च तस्य भगवतो शासनं यथा सति यथा बलं मनसि करोम अनुपटिपजाम सासानोपटिपत्ति इमस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य अन्तक्रियाय सम्बद्धतु अब हम धम्मपद का 25वां अध्याय पढ़ेंगे। भिक्खु वग्गो। भिक्खु वग्गो चक्षुना संवरो साधु साधु सूतेन संवरो घाणेन संवरो साधु साधु जिह्वाय संवरो। आँख का संयम उत्तम उत्तम कान का संयम नाक का संयम उत्तम उत्तम जीभ का संयम कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो मनसा संवरो साधु साधु सब्बत संवरो सब्बत संभुतो भिक्खु सब दुःखापमुच्यति। काया का संयम उत्तम उत्तम वाणी का संयम मन का संयम उत्तम उत्तम सभी इंद्रियों का संयम। भिक्षु सर्वत्र संयम युक्त सब दुखों से होता मुक्त। हस्त संयतो पाद संयतो वाचाय संयुतुत्तमो अज्जतरतो समाहितो एको संतुसितो तमाहु भिक्खुम। हाथ संयत वाणी संयत जो है पूर्ण सुसंयत अंतः सुखी समाधि युक्त अकेला संतुष्ट वही कहलाता भिक्षु। यो मुख संयतो भिक्खु मंतभाणी अनुद्धतो अत्थं धम्मं च दीपेति मधुरं तस्य भासितम्। जो भिक्षु निरहंकारी मुख संयमी बोलता सोच समझकर अर्थ व धर्म को प्रकाशित करता उसका भाषण होता मधुर। धम्मारामो
धम्मरतो धम्मम् अनुविचिन्तयम् धम्मम् अनुसरं भिक्खु सद्धम्मा न परिहायति। धर्म में कर्ता रमण, धर्म से आनंदित, धर्म का कर्ता चिंतन, धर्म का कर्ता अनुस्मरण, ऐसा भिक्षु धर्म से कभी न होता अवनत। सलाभम नातिमन्येय नायेजसंपिहयं चरे अन्ये अन्ये संपिहयं भिक्खु समाधिं नाधिगच्छति। अपने लाभ को न माने महान, दूसरों के लाभ से न करे स्पृहा। दूसरों से स्पृहा करने से भिक्षु न पाता चित्त एकाग्रता। अपलाभोऽपि चे भिक्खु सलाभं नातिमन्यति तं वेदेवापसंसन्ति शुद्धा जीविम् अतन्दितम्। भिक्षु अपने लाभ को न माने तुच्छ, चाहे हो वह अल्प ही। जो आलस्य रहित शुद्ध आजीवक, उनकी प्रशंसा करते देवता भी। सब्बसो नाम रूपस्मिन् यस्य नत्ति ममायितम् असता च न शोचति स वे भिक्खुति उच्यति। नाम रूप जगत में जिसकी न बिल्कुल भी ममता, अकिंचन पर न करे शोक, वह भिक्षु कहलाता। मेता विहारी यो भिक्खु प्रसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं संतं शंखरूप समं सुखम। मैत्री भावना करे जो भिक्षु, वह बुद्ध शिक्षा के प्रति श्रद्धावान, प्राप्त करे वह शांत पद, वह संस्कार उपशमन का सुख महान। सिंच भिक्खु इमं नावं सित्ताते लहुमे सते सति छित्त्वा रागञ्च दोषञ्च ततो निब्बाणम् एहिसि। हे भिक्षु, इस नाव को उलीचो, हल्की नाव का चलना आसान। राग द्वेष को बाहर फेंक, तुम शीघ्र करोगे प्राप्त निर्वाण। पंच छिदे पंच जहे पंच उत्तरी भावये पंच संगाति गो भिक्खु ओघतिन्नोति उच्यति। पांचों का छेदन करे, पांचों को त्यागे, पांचों की भावना करे, पांच बंधनों का अतिक्रमण करे, ऐसा भिक्षु बाढ़ से उत्तीर्ण कहलाए। झाय भिक्खु माच पमादो माति काम गुणे भगस मम सुचित्तम मालोह गुलम गिरी पमत्तो मा कंदी दुःखमी इदं तिड्ढयमानो। ध्यान कर भिक्षु, न कर प्रमाद, न तेरा चित्त भोगों के चक्कर में पड़े। प्रमाद में लोहे की गोली को न निगल, कहीं यह दुख है कहकर जलते हुए तुम्हें क्रंदन न करना पड़े। नत्थि ज्ञानम अपन्यस्य पन्यानत्थि अजायतो यं हि जानन् च पन्या च सवे निब्बाण संतिके। प्रज्ञा विहीन न कर सकता ध्यान, न उसमें प्रज्ञा
जो न करे ध्यान, जिसमें प्रज्ञा व करे ध्यान भी, उसके लिए समीप निर्वाण। शून्यागारं पविट्ठस्य सन्तचित्तस्य भिक्खुनो अमानुषीरति होति सम्माधम्मं विपस्सतु। शांत चित्त भिक्षु पाता शून्यागार में प्रविष्ट होकर मनुष्योत्तर आनंद धर्म का साक्षात्कार कर। यतो यतो सम्मसति खन्दानम् उदैव्ययम् लभति प्रीतिं पामोजम् अनन्तं तं विजानतम्। अमतं तं विजानतम्। साधक जैसे जैसे सजगता पूर्वक स्कंदों का उदय व्यय अनुभव करता, वैसे वैसे प्रीति प्रमोद पाता, जिसे ज्ञानी कहीं पथ अमृत का। तत्रायमादि भवति इदपन्यस्य भिक्षुणो इन्द्रियगुतो सन्तुष्टि पाति मोक्षे च संवरो। वित्ते भजस्सु कल्याणे शुद्धा जीवे अतंदिते। प्रज्ञावान भिक्षु को आदि में है यह करना, इंद्रिय संयम, संतोष, भिक्षु आचार का पालन, अच्छे मित्रों का संग, जो है निरालस शुद्ध जीविकावान। पटिसन्धारवुत्तस्य आचार कुशलोसिया ततोपामोज्य बहुलो दुःख संतं करिष्यति। रहे आचार में कुशल, करे मैत्री पूर्ण स्वागत, आनंद पाकर बहुत करे दुखों का अंत। वसिका बियपुफ्फानि मद्दवानि पमुच्यति एवं रागं च दोषं च विप्पमुञ्चेत भिक्खवो। विप्पमुच्चेत भिक्खवो। मुरझाए फूलों को जैसे जूही दे छोड़, वैसे भिक्षु तुम राग द्वेष दो छोड़। संत कायो संत वाचो संत मनो सुसमाहितो वंत लोकामिसो भिक्खु उपसंतोति उच्चति। शांत काया, शांत वचन, समाधि युक्त अति शांत, त्याग संसार की सभी प्रलोभन, भिक्षु कहलाता उपशांत। अत्तनाचोदयतानं पटिमासे अत्तमत्तना सो अत्तगुतो सतिमा सुखम भिक्षु विहाहिसी। जो स्वयं अपने को प्रेरित करे, स्वयं अपना निरीक्षण करे, वह आत्मरक्षित सजग भिक्षु सदा सुख से विहार करे। अत्ता ही अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति तस्मा संयमयत्तानम् असंभद्रं वाणिजो। स्वयं हम अपने नाथ हैं, हम ही बनाएं गति अपनी, अपनी को बना संयमी, जैसे उत्तम घोड़ा करे संयत व्यापारी। पामोज्य बहुलो भिक्षु पसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदम संतम संखार उपशमम सुखम। विपुल प्रमोद में रहे जो भिक्षु बुद्ध भिक्षा के प्रति श्रद्धावान प्राप्त करे वह शांत पद, संस्कार उपशमन का सुख महान।
यो हवेदहरो भिक्खु युञ्जति बुद्ध शासने सो इमं लोकं प्रभासेति अब्भामुतो वचन्दिमा। जो भिक्षु यौवन में ही हो, बुद्ध शिक्षा को समर्पित, वह इस लोक को प्रकाशित करता जैसे चंद्रमा मेघ मुक्त। बस साध साध बुद्ध के प्रथम बोलों की बात है, अंतिम उपदेश की बात से अलग अलग। वो ही बाली हिंदी साथ साथ, पहले ये पेज फिर ये पेज। पेज बता देना नंबर। चैंटिंग बुक पेज 58। बुद्ध के प्रथम बोलों की गाथाएं। पेज 58। हंदमयम पठम बुद्ध भासित गाथायो भणामसे। आए हम बुद्ध के प्रथम बोलों की गाथाओं का पाठ करें। अनेक जाति संसारम संधाविसम अनिबिसम गहकारम गवीसंतो दुखा जाति पुनः पुनम। अनेक जन्मों तक बिना रुके संसार में दौड़ता रहा, घर शरीर के निर्माता की खोज करते हुए बार बार दुखमय जन्म लेता रहा। गहकारक दिठोसी पुनगेहम न काहसी। सब बातें भासुका भग्गा गहकूटम विसंखतम। विसंहार गतम चित्तम तणहानम खयम अजग्गा। गहकारक, मैंने तुझे देख लिया है, अब पुनः घर नहीं बना सकेगा। तेरी सारी कड़ियां भग्न हो गई हैं, घर का शिखर भी टूट गया है। संस्कार विहीन चित्त की तृष्णाएं समाप्त हो गई हैं। हंदमयम, नेक्स्ट पेज। हंदमयम पश्चिम ओवाद गाथायो भणामसे। आए हम बुद्ध के अंतिम उपदेश की गाथाओं का पाठ करें। हंददानी भिक्खवे आमंत्रयामि वो। आओ भिक्षु, मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ। वयधम्मा संखारा, सभी संस्कार वय धर्मा है। अपमादेन संपादिताति, पमाद रहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अयम तथागतस्य पश्चिमा वाचा, यह तथागत की अंतिम वचन है। बस युधिष्ठिर।
So we'll now Connected meditate. to OnePlus 3G. Meditate and listen to a short reflection by Ajahn Amro. Don't complicate the uncomplicated. We'll meditate for 45 minutes. To be distracted literally means to be pulled apart. This describes the experience of attention being drawn away into the imagined past or the imagined future, projections about the present. The attention pulled away from the reality of things to absorb into an imagined, created. Compounded form. The past, the future, the present, according to our fears, our wishes, our desires, our aversions, our imagination. If we don't understand how distraction works, then the attention will be continually caught in that. We know it's agitating, something in us doesn't like that or wish for it, but yet the mind continually gets caught in it, endlessly distracted, pulled apart, pulled this way and pulled that way, pulled away from the reality of this present, from the Paccuppanna Dhamma, the here and now, ever-present Dhamma. We can be sitting here in the temple, and suddenly you realize that you're replaying a conversation that you had with someone yesterday. How can he speak to me like that? You know, that's unfair. Repeating words, the attention swept up in the memory, caught in the emotion of indignation, fear, resentment. Or an imagined future, where I'm going to go after the retreat is finished, planning our son's wedding, looking forward to your ordination. Often we wake up in the middle of some kind of fantasy, suddenly realize that you're replaying an argument, inventing resentful statements about this person who said something unpleasant, unwanted to you yesterday. We suddenly realize, hang on a minute, I'm in the temple, I'm supposed to be meditating. This isn't yesterday or last week, last year. I'm still in the temple, I haven't got to my travels. I'm still a layperson, I haven't got to my ordination yet. And when we wake up in the middle of that kind of a fantasy, whether it's past or future that's being created, or some story occupying the present, it's a useful thing to see how that distraction occurred, to follow it back, to trace it back to its source, to its origin.
When we notice that we've been sitting there, ranting away, imagining our complaining criticism of someone who spoke to us unkindly yesterday, you can ask, okay, how did I get here? Where did this begin? You follow back the conversation, replay it to yourself. Why did I start thinking about that person? Oh, I was thinking about them because I saw the back of their head when I walked into the temple. That was all. There was visual object, the eye consciousness. The light reached the eye. There's contact, feeling, perception. It's the back of someone's head. Oh, it's the back of his head. Him. The mind goes into thinking and then conceptual proliferation, papancha. So then we sit down, close the eyes, think, okay, now it's time to meditate. Because of attachment to that thought, that sense impression, and the mind goes, well, I can't meditate because he's just behind me, and how am I supposed to forget what he said yesterday? And off it goes. That's how it began. So we trace it back, we realize it was just seeing. That's where it began. Light reached the eye consciousness arose. That's all. Very simple. Nothing complicated. Not even any sense of self involved. Just seeing. Or we hear the sound of somebody coughing across the hall. Oh, it's her. How am I supposed to meditate when she's here? Doesn't she know she's the one? It's just a sound. The ear, vibrating air, ear consciousness arises. That's all. No self, no other, no complication, no papancha. As the Buddha said, apapanchang papancheti. Don't complicate the uncomplicated. When we begin to understand distraction and how it works in this way, whenever the mind is lost in a particular fantasy, a hope, a fear, a resentment, nostalgia, longing for an imagined past, projecting an exciting and interesting future or a frightening and intimidating future, creating our own story, creating other people, we can carry out this simple exercise. And you find the attention caught in that story. Loving, hating, fearing, hoping, reminiscing, regretting. Follow it back. Trace the chain of thoughts, the chain of associations. Follow it back. The images, the words, remember where they came from. Chase it back through, follow it back to its source. And almost every single time, it's just a sensation in the body, a sound that we hear, a random memory. A texture in the mouth, a flavor,
That's all. Seeing, hearing, smelling, tasting, touching. When we bring attention to the simplicity of perceiving, sensing, life is very uncomplicated. There's just hearing. There's not even a hearer and a heard. There's not a seer and a seen. There's just seeing, hearing, feeling. The mind doesn't even need to add an I who is the doer, an I who is the experiencer, an I who is remembering. It's just memory arising. It appears, does its thing, and then it dissolves. It's just the body. The perception of the body arises, does its thing, and then dissolves. Extraordinarily simple, free of self and other, utterly uncomplicated, spacious. When the Buddha described the reflections on emptiness in relation to the 5 khandhas, each one of them there's a form, but the form is empty. He compared the body to a lump of foam floating on the river. Yeah, there's a shape to it, a lump of foam like a cloud, but there's nothing solid there, it's just froth. There's no core, no heart, no essence. There's a shape, but just a shape. There's no thing, no fabric, no essence which is the core. The body is like a lump of foam. Feeling is like a water bubble. It's when raindrops land on a pond, the surface forms into a bubble very briefly. There's a shape, a round form, and then it's gone. There's a shape, but it's empty. Perceptions, sanya, are like a mirage, a shape, a form in the air, in a desert. Looks like trees or buildings or water, but there's nothing there. It's just patterns in air. Patterns of light. There's a form, but no substance. Sankhara, mental formations, emotions, memories, ideas, concepts. Like the trunk of a plantain tree, a banana, the stalk of a leek or an onion. It's layer and layer and layer, layer upon layer of leaves. No trunk, no heartwood. The form is just one leaf lapping on another. There's a shape, but no essence. You get to the center and there's no thing there. Vijnana, discriminative consciousness, is like a conjuring trick. It looks as though the conjurer produced a rabbit out of nothing. The hat was empty, now there's a rabbit. It looks that way, but it's not really that way. It's a trick, an illusion. It seems solid, it seems real, but that's just the appearance of things. There's no real thing there. And when we follow our distractions back to their root, it goes from
me resenting that person, me longing to be back in that time, me regretting that action, me hoping for that place in the future, me and the world, me and that, self and other, seems so solid, so real. Me walking around in my story, me having to deal with that person, me wanting to be in that place, me afraid of having to relive that painful event, me and that, self and other. In the world of distraction, the prapancharama, the abiding place of conceptual proliferation, self and other is apparently real, me and the world. When it's followed back to its root, that becomes less and less of a duality. Subject and object resolve each other. There's just hearing, feeling, seeing, smelling, tasting, touching, knowing. There's no knower and known. There's just this. This experience, selfless, natural, spacious, timeless. No past, no future. No birth, no death. No place. No person. But the absolute reality of knowing itself, a fundamental quality of experience. This knowing, awake, aware, this can be said to be real, the one real thing. This knowing of this moment. That's why we call Buddha a refuge. The Dhamma is a refuge. Sangha is a refuge. When the awake mind knows the way things are, it results in harmonious action. That's our refuge, moment by moment. When we let go of distraction, train the mind to be that very awake, aware, knowing quality. This is taking refuge, the essence of taking refuge. It's not just a matter of repeating Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammāṃ saranang gacchāmi, Sanghaṃ saranang gacchāmi. But it's this very gesture of letting go of distraction, being awake. Trusting this moment, not investing in a past or a future, trusting in this, not pushing anything away, not hanging on to anything, just being awake in this moment, hearing, feeling, liking, disliking, comfort, discomfort. That's all. Supremely uncomplicated. And that which knows it, that which is aware of the patterns of change, is limitless, unbounded, unsupported, unsupportive, completely free, completely non-personal. It's not a human, not a woman, not a man, not old, not young. There's no shape, no birth, no death. This is a refuge, perfectly uncomplicated,
perfectly free, complete, invulnerable.
अच्छा, जीत मैत्री करें।
हाँ, हम ब्रह्म विहारों की साधना करते हैं। पहले मैत्री ब्रह्म विहार रोज की तरह अपने से शुरू करते हैं। सुखी अत्तानं परिहरामि। अब अपने प्रियजनों को याद करके उनका तरफ ध्यान करके मम माता पितु आचार्या च ज्ञातिमित्ता च सब्रह्मचारिणो च अविराहोन्तु अव्यापञ्जाहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। अब हम सबका रक्षा करने वाले आरक्षण देवताओं के प्रति आरक्षा देवता, भूमट्ठा देवता, रुक्षट्ठा देवता, आकाशट्ठा देवता अविराहोन्तु अव्यापञ्जाहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। अब समस्त संसार के हर प्राणी के प्रति, चाहे किसी भी लोक में हो, किसी भी रूप में हो, सर्वे सत्ता सर्वे पाना सर्वे भूता सर्वे पुंगला सर्वे अत्ता भाव पर्यापन्ना सम्बा इत्थियो सर्वे पुरुषा सर्वे अरिया सर्वे अनरिया सर्वे देवा सर्वे मनुष्या सर्वे विनिपातिका अविराहोन्तु अव्यापञ्जाहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। करुणा ब्रह्म विहार उन सभी को मन में चिंतन करके जो कष्ट में है इस समय, हजारों लाखों करोड़ों लोग,
जो सभी रोग से ग्रसित हैं, दुखी हैं, उन सब के लिए शुभकामना। सबके दुख दूर हो, रोग से मुक्ति हो, रोग के उपचार में जो बाधाएं आ रही हैं वो सब दूर हो। सर्वीतियो विवर्जन्तु शोको रोगो विनश्यतु माते भवतु तरायो सुखी दीर्घायुको भव, सुखी दीर्घायुको भव, सुखी दीर्घायुको भव। कृतज्ञता ज्ञापन सबके प्रति जो विषम परिस्थिति में सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। ये सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, किसी प्रकार रोग से ग्रस्त न हो पाए, सब उनकी कार्य में सहायता करें, कोई बाधा न करें, ऐसी शुभकामना करते हैं। और जो भी पुण्य हमने आज तक अर्जित किए उन सबको उनके साथ साझा करते हैं। पुण्यस्येदानि याना अन्यानि कथानि मे तेषां च भागिनो हन्तु सत्तानन्तपमानका। मुदिता ब्रह्म विहार ऐसे आजकल के समय में बहुत महत्वपूर्ण, ताकि चित्त हमारा प्रफुल्लित रहे, कुछ समय अपलिफ्टेड रहे। तो अगर हम किन्हीं को जानते हैं जो सुख में हैं, परिस्थितिवश घर में खुशी है, या उनको जो बीमारी से मुक्त हो गए हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, या कुछ भी जो हाल ही में या पास्ट में हमने बहुत खुशी प्रदान की हो जिसने, उसको याद करके मन में प्रसन्नता जगा सकते हैं। शुभकामना करते हैं कि सभी प्रसन्न लोग प्रसन्न बने रहे, उनकी सुख संपत्ति बनी रहे, कोई व्यवधान ना आए। यथा लब्धा संपत्तितो मां गच्छन्तु। अब उपेक्षा ब्रह्म विहार, बाकी तीनों ब्रह्म विहारों को संयमित करने वाला, ताकि दुख में हम ज़्यादा व्यथित ना हो, सुख में ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, समता बनी रहे। मैत्री का अतिरेक कहीं आसक्ति में न बदल जाए, इन सबको बैलेंस करने के लिए उपेक्षा ब्रह्म विहार। इसका आधार सम्मा दिट्ठी, हर परिस्थिति अनित्य है ऐसा समझ के मन को शांत रखने का प्रयास करते हैं
और ये समझकर कि सभी परिस्थितियाँ हमारे अपने कर्मों का फल है। अप्रिय परिस्थितियों में किसी और को दोष नहीं देते। तो बार बार कर्म सिद्धांत का पाठ करना, याद रखना बड़ा उपेक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्मस्य का कर्मदायादा कर्मयोनि कर्मबन्धु कर्मपटिसरण यं कर्मं करिष्यन्ति कल्याणं पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। और सभी प्राणी अपने कर्मों के साथ सुख दुख को महसूस करते हैं। इसका अर्थ ये ना निकाला जाए कि जो लोग दुखी हैं अपने कर्मों से दुखी हैं, हमें क्या लेना देना। वो फिर एक इम्बैलेंस हो जाएगा। जो दुखी हैं उनको देख के करुणा जागे, उनके दुख दूर करने का भाव जागे, लेकिन मन समता में रहे, दुख देख के व्यथित ना हो, अनबैलेंस्ड ना हो। और सचमुच में बैलेंस तो लोकोत्तर सम्मा दृष्टि से ही आता है। यो आर्य सच्चा नवेच्च पश्यति, सारे आर्य सत्यों को निरंतरता से देखना, समझना कि दुखों का असली कारण क्या है। पंच उपादान खंदा दुखा। सभी प्राणी ऐसा कर पाएँ, उनकी हम सबकी दृष्टि सम्यक हो, ऐसी शुभकामना करते हैं। क्योंकि सच्चा सुख तभी मिलेगा जब सभी समाज में भी, हम अपने को भी और सारे समाज में सुख तभी प्राप्त होगा जब सभी लोग सम्मा दृष्टि में प्रतिष्ठित हों, अपने दुखों का कारण राग द्वेष को माने, तृष्णा को माने, भासमान कारण कोई भी हो। तो ऐसी शुभकामना के लिए गाथा को पाठ करते हैं। सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे होन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापमागमात्, मा कञ्चित् दुःखमागमात्, मा कञ्चित् दुःखमागमात्। सभी प्राणी की दृष्टि सम्यक हो, कोई पाप कर्म न करें, हम सब दुखों से बचे रहें, शोक से बचे रहें। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु मे। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।
सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादे स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि